Hello everyone. In the continuation of first video, I am starting from the same topic, preparation of lyophobic sole. In last video, we have ending with the preparation of lyophobic sole by the condensation method or by the chemical method. And now we will use the physical method for the preparation. And first method is dispersion method. There is two type of method is used, dispersion method और पेप्टाइजेशन. फर्स्ट इज डिस्पर्सन मेथड, दैट मीन्स ब्रेक करना लार्ज साइज मॉलिक्यूल को छोटे में. सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन ब्रेडेड आर्क मेथड. दिस मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिपेयर सॉलिड सोल. Solid soul means for example gold, silver, platinum. If we want to prepare the colloidal solution of these metals, then we use this method. In this method we will take two container. In one container we will use dispersion medium such as water we will use here, and we use two electrode. These electrode must be of the same metal from which we can want to make colloidal solution. For example, I have taken here as gold, and here we have taken a other beaker, other container which is full of ice bath. Why it is ice bath is used, I am going to tell you. When electrodes are connected with the high potential, then the high voltage is applied and the gold molecules, gold atoms get disintegrated into water, and there is a arc is developed between these two electrodes. Therefore it is known as braided arc method. Arc is very high, it contains very high temperature, therefore the gold molecule which disintegrate into dispersion medium can get evaporate. So we use ice which make it into the solution and we will get the colloidal solution of gold. Next method which we will use, that is peptidization. Peptidization method is used to precipitate the colloidal, used to prepare the colloidal solution from precipitate. Means when freshly prepared precipitate FeCl3 is mixed with some electrolyte, we will get the colloidal solution. And the next topic is purification of colloidal solution. The colloidal solution which we have already or we are prepared, is it purified or not? So we will use basically four type of method. First is dialysis, electrodialysis, ultrafiltration and ultracentrifugation. So one by one we will discuss this here. First is the dialysis process. This is a very natural process and always occur in our body. As we know that blood is a colloidal solution, and in our body kidney act as a dialyzer. That means kidney purify our blood. In this process the colloidal particle is separated from the impurity by the diffusion through porous membrane or semi-permeable membrane. Our kidney work as dialyzer. When blood is passes through kidney, all the impurities get separated out and blood get purified. This method is known as dialysis. Second method is electrodialysis. That is a special type of dialysis, because this process is very slow. So to accelerate the process of dialysis we use electrodialysis. In this figure, simple a parchment paper or dialysis membrane is here, and we get the impure colloidal solution. When it dipped into a dispersion medium or water, all the impurities get separated and colloidal particle get purified. For accelerating this process we use anode and cathode, that means electric charge is here, electric field, and by applying electric field the process can be faster. Third is the ultrafiltration. Ultrafiltration is the process basically used for colloidal particle. When we use simple filter paper, it has pore size different from other. That means it can filter only suspension. That means particle size is very large.
So we use impregnated with gelatin or collidone. That means we use a layer of gelatin on filter paper so that the particle range is between colloidal particles and we can separate or purify the colloidal solution. Next is the property of colloid. First property is optical property, very important, that is Tyndall effect. When any beam of light is passed through ट्रू सॉल्यूशन, आप एक पानी का ग्लास ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी शुगर या सॉल्ट डाल दीजिए, उसमें से लाइट पास कराएंगे, इजीली पास हो जाएगी. इफ एंड इवन यू कांट एक्सेस दैट कि लाइट पास भी हुई है या नहीं, बट व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिक व्हेन यू पास द लाइट थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ बिकम विजिबल. जब आप उसको 90 डिग्री परपेंडिकुलर आप देखेंगे तो उसका पाथ विजिबल हो जाएगा. फॉर द एग्जाम्पल आई हैव यूज दिस डायग्राम. ट्रू सॉल्यूशन से लाइट पास कराते हैं, इजीली पास हो जाती है, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, बट इन कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ कैन बी अपीयर्ड. फॉर एग्जाम्पल स्काई अपीयर्स ब्लू. दैट इज द बेसिक क्वेश्चन which comes in exam. Why sky appears blue? Because in our atmosphere there is lots of dust in our air. So this dust is a colloidal particle. Basically when light enter into our atmosphere, these dust particles scatter the light and only blue color is visible from earth. Therefore we can see the sky as blue. Next is charge on colloidal particle. All the colloidal particles are charged in nature. Some are positively charged and other are negatively charged. But how these colloidal particles get charged? Colloidal particle, basically adsorption phenomena is used in this process, and preferential adsorption of ion takes place. What type of preferential adsorption means? Selective adsorption. किस तरीके, जब आप किसी भी डिस्पर्स्ड मीडियम को डिस्पर्जन मीडियम में डाल रहे हैं, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डाल रहे हैं, तो किस तरीके का कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. इट डिपेंड अपॉन द सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, दैट इज नोन एज प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन. वी विल टेक हियर टू एग्जांपल. पहला एग्जांपल हमने लिया कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने ऐड किया किसमें, KI सॉल्यूशन में. तो ऑब्वियसली AgNO3 प्लस KI जो है वो क्या बनना चाहिए, AgI. ये जो AgI प्रिपेयर हुआ ये अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब आयोडाइड आयन को एड्सॉर्ब कर लेगा. AgI अपने सराउंडिंग में क्या एड्सॉर्ब कर लिया, I नेगेटिव. तो कोलाइडल पार्टिकल कैसा बन गया, नेगेटिवली चार्ज. अगर वो अपने सराउंडिंग में Ag पॉजिटिव को एड्सॉर्ब कर ले तो वो पॉजिटिवली चार्ज. लेकिन कब पॉजिटिव को कब एड्सॉर्ब करेगा, जब हम KI सॉल्यूशन को डालेंगे किसमें, AgNO3 में. आप ध्यान रखना यहाँ हमने क्या डाला, AgNO3 को हमने ऐड किया KI में, तब नेगेटिव चार्ज, बिकॉज I नेगेटिव ज्यादा है. व्हेन KI को हम AgNO3 में ऐड करेंगे तो Ag पॉजिटिव ज्यादा है, तो Ag पॉजिटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा. दैट इज प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन. सिमिलर केस विद FeCl. FeCl3 को आप वाटर में ऐड करोगे, Fe के ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, अगर NaOH में डालेंगे तो नेगेटिवली चार्ज फॉर्म होगा. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड इज ब्राउनी मूवमेंट. As we know, all the colloidal particles are charged either positively or negatively charged. अब सिमिलर चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे. दैट मीन्स कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे. जब एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो कभी भी कंडेंस नहीं हो पाएंगे, एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे और एक दूसरे से के साथ जिगजैग मोशन में रहेंगे. दैट मीन्स ड्यू टू दिस ब्राउनी मूवमेंट colloidal particle never get settled down. That means colloidal particle remain stable just because of Brownian movement. What is the cause of Brownian movement? Cause of Brownian movement is charge on colloidal particle. Next is electrophoresis. Electrophoresis means electric field की presence में, phoresis means movement. Electric field की presence में colloidal particle का movement. For this we use a U-shaped tube और इसमें हमने colloidal particle को fill कर दिया and
we will use two electrode, one is positive and other is negative. If the colloidal solution is positively charged, then it moves toward negative electrode, and if it is negatively charged, it will move toward positive electrode and colloidal particle gets settled down. That is known as electrophoresis. Now properties of colloids. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड में नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस is the simple osmosis we have already studied in the chapter of solution, but when under the influence of it is taken, that is known as electroosmosis. And the next is coagulation, very important. That means flocculation term is also used, precipitation term is also used. When any small amount of electrolyte is added into a colloidal solution, the coagulation takes place. For example, आप दूध लेते हैं, milk is a colloidal solution. आप मिल्क लेते हैं तो मिल्क में अगर आप स्मॉल अमाउंट में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, कोई एलम डाल देते हैं, देन क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, दूध फट जाता है. सिमिलरली आपकी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, ब्लड फ्लो होने लगता है बाहर, देन वी यूज एलम यूज करते हैं तो अपने आप ब्लड बंद हो जाता है. यही काम हमारे बॉडी में करता है विटामिन के. जैसे ही आप उसे बंद करेंगे, थोड़ी हाथ से बंद करेंगे, थोड़ी देर बाद अपने आप ब्लड जो है वो रुकना बंद हो जाता है, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, सूख जाता है थोड़ी देर बाद. दैट इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड. अब हम कौन सा यूज करें, हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करें कि उस कोगुलेशन हो, तो वो डिपेंड करता है. आपका रूल है, दैट इज हार्डी-सुलजे रूल. हार्डी-सुलजे रूल ये डिफाइन करता है कि विच इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी टेकन सो दैट कोगुलेशन शुड बी मैक्सिमम. सो वी विल इट डिपेंड अपॉन द वैलेंसी ऑफ कैटायन. जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कैटायन और एनायन की, उतनी ही ज्यादा कोगुलेशन पावर होगी. मीन्स इफ वी यूज NaCl, BaCl to AlCl3, which one has the highest coagulating power? It depend upon the valency of cation. Similarly for negative ion, so coagulation power जो है डिपेंड करती है वैलेंसी पे. नेक्स्ट इज द गोल्ड नंबर, गोल्ड सोल हम कह सकते हैं इसको. These are basically protective colloids. Protective colloids means I have already discussed that the lyophobic colloids are unstable in nature and we have to use some chemicals to protect them from precipitation. So these colloids which protect the lyophobic colloids are known as protective colloids. We will use here for gold sol. This gold sol is basically used in the intravenous injection because our blood is a colloidal solution and intravenous injection contain electrolyte. When electrolyte will added into blood, maybe blood get coagulate. So small amount of gold sol is used in intravenous injection to protect the blood from coagulation. Clear? Here are too many applications of colloidal solution. Sky appears blue in the sewage disposal because impurities are colloidal particle. When alum is added into it, they get settled down. Or smoke precipitator, delta formation, these are the basic application of colloidal solution we will use here. And next is the emulsion. Emulsion basically liquid in liquid. Two type of emulsion, oil in water and water in oil. Dispersion phase and oil is dispersed phase and water is dispersion medium. Water in oil, where water is dispersed phase and oil in dispersion medium. So that is enough for colloidal particles, colloidal solution. Thank you so much.